So, Preksha, tell me about you, how you started your journey, because I was going through with your Instagram and I found that there is a lot of entertaining things were available, funny things, I would say that, and you were, I think, doing a lot of reels with your family also, with your two kids that you have, and वो भी twins, I think. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि it's very difficult to handle two kids and वो भी twins. So, and then I think you also had a, Yes. lot of issues in the past in terms of after, delivering the baby. So you were going some bad times also related to your health only. So tell me about you. Yeah, so I was a regular 9 to 5 corporate job person. And suddenly pregnancy happened. And after, just as my pregnancy started, in my first checkup, my doctor said, I suspect that you're going to have a lot of difficulty. So you will have to quit your job right away. I said, but I'll at least have to give my notice. Nobody relieves you like that. She's like, forget the notice. You're going to resign on email now. I will strictly put you on bed rest because if anything happens, it's on you. And obviously, if anybody says that to a freshly pregnant woman, it's kind of terrifying. So I put I mean, even my resignation was an email and I called my bosses and I was like really apologetic because being in HR, you can't be the defaulter. So that is how the journey to motherhood started, like with a big blaring warning that anything could happen at any moment in time. And the entire pregnancy was a bit complicated. I was completely on bed rest. I was not even allowed to sit up till the end of pregnancy. So it was really hard to do that, from like a corporate job to just simply lying down and doing nothing. And all your friends are working in office. And I mean, I wasn't pregnant in the Netflix era, although I wish I was. So, and Instagram also wasn't that much of a thing. So I only had Facebook and, some chatting to do with one or two friends who I would randomly catch because kitna baat kar loge. So it was a lonely journey. That fulfillment wasn't happening. And gradually the checks also stopped coming. So that also was a question mark, as you get used to the money. And as my delivery happened, that was another whirlwind of an experience. Physical pain, mental botheration, and then two mouths to feed who would fall and cry. I mean, who would fall ill a lot and would cry so much. I was like, I don't know what's wrong with my babies, but there's very little support in terms of knowledge on the internet and very little support in terms of people knowing what to do when somebody's pregnant with twins. So I remember I asked my mother, like, how does breastfeeding happen? And she's like, it'll happen, don't worry. I said, okay, but how does it happen? It'll happen, don't worry. So then I asked my mother-in-law, and she's like, I asked her, how do you breastfeed? And what happens in breastfeeding? She's like, भगवान बैठा है ना, वो सब करवा देता है. I was like, नहीं, but होता कैसे है? अरे बैठा है भगवान ना, तू चिंता क्यों करती है? And I was like, okay, that's a nice start, but that's not the answer I was looking for. And my breastfeeding journey was an absolute mess. I couldn't manage. Time and again, over and over, I was failing as a mother in my own eyes. And there was nothing that brought me happiness or that brought me some kind of solace or satisfaction. Like every single day I was doing something wrong. My kids were falling ill. But there was nobody to tell me that, this happens with even the most experienced mothers. Children do fall ill a lot. Yes. And and with twins, there's bound to be a little more crying than there's supposed to be. And yes, that is when one of my school friends, again, who had quit a job, had started doing some online content writing. One day I found her online during the afternoon and I was like, yeah, how come you're online? Because she also, she was a new mother and she was doing other stuff. So she said, I've started doing some bit of content writing. So somebody from my husband's reference said that we need content writers. So I thought to give it a try. And I said, oh, wow, this looks very interesting. Please tell me also how to start. So that friend, she helped me take my first step into content. I used to do a lot of content writing in my job. It was a very content. So it was quite related that way.
Yeah, I mean, I knew I could write well. Okay. And that is when I started my content journey, and my I could write well idea of myself completely vanished, because content writing and a flair for writing are very different things. So then Yes. I did write for around 14, 15 different niches. I learned to research. I learned to write from comedy to very serious to informative. So I got a lot of experience there. And one thing leading to another, I stumbled upon a parenting platform that was just coming up. There, I got the opportunity to write a lot about parenting. And that is where the editor there, she told me that you have a real flair for writing comedy. You're pretty good at it. Mm. I was like, comedy in me? I used to think I'm a more of a informational kind of a person, that, I would impart more information and tuck, listicles. So she was like, no, you're fabulous with comedy. I said, okay, that's weird, but okay, let's give it a try. So that is when I started writing comedy plus parenting related content for that children platform. And then on that platform, I met with another lady who was an influencer, and then she helped me to start. Actually, we used to call ourselves bloggers then. So she helped me start my own blog, Mm. and Instagram was an extension of blogging at that point in time. And gradually, blogs have taken a backseat, and Instagram has come to the forefront. In between, the TikTok Mm. fever came, and then TikTok vanished, and then Reels happened, and then so slowly and gradually, step by step, I couldn't see what I was going to do next. But whatever came my way, I just kept experimenting with it, and I kept getting good response. So I was pretty happy. And looking at me enjoy my stuff and earning a little bit of money on the side. Um, my husband, my children were also enthusiastic. They respected my passion. They respected that I'm actually enjoying what I'm doing, and I'm able to give sufficient amount of time at home as well. Mm. So a lot of support came from them, and the Mm. rest is right in front of you. It's been Correct. around Yeah. 7 No, years definitely since family I, support is the most important. yeah, it's been 7 years since I've been on Instagram alone, and say around 2.5 years when I Oh, started really? content Oh, writing. So it's been a really long time. I've seen Instagram when it was oh. just, a square picture sharing app. Ah. And we were thinking it is just to share the pictures only. Initially it was like that you Yeah, can share your pictures. I, We I never thought started of my that. Instagram It. I started my Instagram to post pictures that I did not want to share with everybody on social media. So it was that secluded that not many people are using it and stuff like that. But now Ah, everybody's coming on Instagram, right. so that's a game changer altogether. Right. That is quite interesting, and same time it was inspiring also, because most of the time what happened when you become a mother, so just say I can see around me, ladies think, no, now I will be with my kids and family next 5 years. I'm going to, although we are going to taking care of that as well, but same time you just think about yourself also, that how you get the time for yourself, and then you can take care of them all Being as well. right, but it's really very hard. I mean, for me, um, if I have one task of parenting, one task of blogging, and say somebody says that, okay, I give you an hour of a break, so I'll finish the other three first, and if I have the time and the energy, then I would think about priority accept me. And I know that's not the right thing to do, but that's just how some of us are wired. I'm really happy for people who are able to give time to themselves, focus on their energies, focus on their recharge methods. I think that's really needed in today's times, where every woman, every person, in fact, is juggling with a way too much overload in their in their Right, lifestyle. shoulders. Right. And especially with you when you have two boys and twins. Boys too is Yes. something completely different in the house, and with Yes. a Up girl or boy until they were six, combination. 7 years old, up until they were 6, 7 years old, it was
very hard. So from the time that they are born up until the age of 4.5, 5 years, it is increasingly hard. And then So it slow down. every month is a new challenge, is a new problem, is a new technicality. It's very hard to manage them up until they are 5 years old. That after 5 years, they get a little bit of their own sense. They become a little independent with Correct. their cleaning and hygiene and eating. And then gradually there's a plateau that, okay, some days are good, some days are complicated. And then now they're 10, 11 years old. It's a little easier now. So they'll need less of my interference and they're busy with their own stuff. There's school, there's tuition, there's classes, Their own there's stuff, right? hobbies, there's friends, there's everything now. So I am a portion of their day now. Apart from management, I mean, Right, right, you right. know, if everything that they need is on schedule, then they don't need me for too much. But yeah, there's time that we spend together undoubtedly. So like after they come from school, I make sure that there is, we call this the mama time. And right after they come from school, we turn on the AC, we take a bottle of cold water and we sit in the room, we change clothes, we put our tiffins away and we keep talking for a complete hour about what happened today in school or anything at all, but no devices. Right, So right, we right. spend that 1 hour every day, and sometimes they tell me important stuff. Most of the times they don't. But I get good laughing time, playing time with them. And there's a very deep connect With in them. that 1 hour. There's a lot of hugs, there's a lot of kisses, there's a lot of, because they're boys, there's a lot of fart and sweat and poop and all these jokes. But it's a wonderful time. So that is the me time that I really look forward to the entire day. Yeah. So as an influencer, Prisha, so how do you think about your content? Every day, every minute you think about it, or some specific time? How do you think that it is going to be a people will like this, or how So there are a couple of aspects to it. In terms of content, some branded content is there, and I maintain a schedule that, okay, this is the day the visit is going to happen, and this is the tag for number of days within which the video has to be delivered. And the content that I make, which is non-branded content, that keeps running in my head. So sometimes I'm thinking this, sometimes I'm thinking that, and I just pen down ideas that really fascinate me. That's fine. I'm so sorry. I think because of heavy rain here in Indore, actually the registered office of Always Live Yoga in Indore. So, काफी heavy rain चल रहा है. There's a lot of internet issues going on. So I've just connected again, and I'm Never so mind. sorry for that. कि हमारा conversation इतना अच्छा intense चल रहा था, and suddenly this happened. It's okay. It happens all the time, every single time. हाँ, पर अभी मुझे अच्छा दिख रहा है. आप भी बहुत सुंदर दिख रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी बेटर है काफी. So no, I asked you something very important question, which I also think a lot. कि as an influencer, what exactly you think when you create any reel, और आप लोग सोचते रहते हैं कि नहीं आज देखो सोते जागते अब तो बस एक अच्छा सा बनाना है रील, एंड वो भी एक मोटिवेशनल होता है उसके पीछे कि जब people like what this. happens is, so what happens is that sometimes there is branded content. So with branded content, I know that, okay, this is the day I'm going to go to the place. So I'm going to get my footage there. Then I'm going to spend XYZ number of days. And then XYZ is the date when I'm going to post it. So it is in communication with the brand. So those dates are fixed. Then there are other ideas that keep coming to my head that, and sometimes you're looking at other people's ideas and you're like, okay, wow, this is something that I can work on. This is something I can make. So I have separate folders in my saved section of Instagram. So, this is my humor content. This is my depression related or motherhood related, or, this is something that my kids like to watch. So I have those different folders made. So I keep ideas there. Sometimes I shoot footage and I wait that, okay, whenever I'm shooting, whenever I'm out on an event, whenever I am nice and ready, I take some general footage of me just doing random stuff. And on days when I want to post, but I cannot shoot, I just use those videos and I put my text idea over there and people like it, and then it goes from there. Because people are not always engaging with the video, they're engaging also with the text form of
whatever idea you're putting out there. As you must have seen, there are a lot of psychology-based tips in text. In right. the background, I'm probably just sipping a drink. So I Hmm. take those random shots for days when I want to post text content. For content which I have to like typically shoot, for that, I always have my script and my idea ready in my head. Somewhere I write down the entire script. I see what all settings I need, how many shots I need to make. I break it down completely as to how the idea is in my head. For example, if I have to say talk about a glass of water, so I describe my shots completely. That shot one, I enter the room with a glass of water. Shot two, I am sipping water. Shot three, I am talking with a voiceover, describing with my hands, but I'm speaking in a voiceover. And these are the lines that I'm going to say in the voiceover. And then the final shot, shot number four, I'm going to put down the glass of water. Shot number five, I'm going to say namaste. So this is how I break down my entire video and then I shoot it. So these are the strategies that I usually use when I'm trying to build content. And it is also very important to understand two to three things. One, of course, you must follow trends. Some shows really work. Two, you should know what your audience likes. It's like I'm posting about water, but my audience want to see about Correct. maybe food. So I have to post different kinds of content to understand what kind of taste does my audience have. जैसे आप साड़ी की दुकान में जाते हो तो साड़ी वाला आपको 4 या 5 टाइप की चीजें दिखाता है, फिर आप जिस पे इंटरेस्ट दिखाते हो फिर वही आपको वो ज्यादा दिखाता रहता है कि अच्छा ठीक है इनको बनारसी का काम पसंद आ रहा है तो इनको बनारसी दिखाते जाओ. That is how you catch your audience. The third is that it is always important to ask yourself, वीडियो तैयार होने के बाद क्या मैं ये कंटेंट देखती, अगर मैं ऑनलाइन गई होती क्या मैं ये कंटेंट देखती, क्या ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता. So I think these three questions really help me to deal with my content better. You're on mute. I cannot hear you. Yeah. Yes. Actually, I changed my place just to thought maybe somewhere I was getting a better network. So, but I was listening you and I was thinking, as a, just say, now a lot of people would like to try as an influencer and especially women's or जो, or especially women's, those who have a kids, क्योंकि वो एक उनका area ही है, I would say that. So, what sort of advice that you would like to give, how they can start their journey and what exactly the qualities influencer as an influencer must have before thinking, yes, I can be the influencer. नंबर वन, ऑनलाइन अपना प्रोफाइल बनाने के पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किस टाइप की चीजें बनाना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डिटर्मिन होकर गए हो कि हाँ मुझे योगा के बारे में ही बात करनी है, तो आप अपने नीश इधर उधर मत भटकिए. मतलब आप एक दिन योगा बात कर रहे हैं, आप दूसरे दिन जो है आप तंदूरी चिकन की रेसिपी दिखा रहे हैं. मतलब अपना वो शिफ्ट मत करिए, फोकस शिफ्ट मत करिए. आपका कंटेंट एक ही टाइप का होगा. लेकिन मुझे जैसे योगा बनाना अच्छा लगता है लेकिन मैं कॉमेडी भी अच्छा कर लेती हूँ, तो आपको डिसाइड करना है कि आप एक ही चीज करो ताकि आपके ऑडियंस को पता रहे कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो. आप जितना नीश रखोगे ना कि मैं ये भी करती हूँ, 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 उतना आपकी ऑडियंस कंफ्यूज होगी और उतना कम आपको फॉलो कर पाएगी. तो इस बात को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर्स कैमरा के आगे खड़े होके पोज मार के वीडियो बना के चले नहीं जाते हैं. बहुत सारी टेक्निकलिटीज उसके पीछे आती हैं. आपको अपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ने आने चाहिए कि आपका जो स्टैट्स आ रहा है इंस्टाग्राम के थ्रू उसका क्या मतलब हुआ, उसको हम कैसे आगे यूज कर सकते हैं, कौन से टिप्स और ट्रिक्स जो है काम आते हैं, कौन से लोग स्कैम कर रहे हैं टिप्स के नाम पे और कौन से लोग जेन्युइनली टिप्स दे रहे हैं, किसकी टिप्स काम करती हैं. दूसरा कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं उससे कोई ऑफेंड तो नहीं हो रहा है, या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो उस ठीक ठाक क्वालिटी का है कि नहीं.
सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या मेरे पास इतना वक्त है कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब हैंडल कर सकूं? क्योंकि हम सही बात। इन्फ्लुएंसिंग को बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे फोटो खींच के ही डालना और कुछ नहीं करना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इसको एटलीस्ट एक पार्ट टाइम जॉब की तरह लेना है। अगर आप फुल टाइम की तरह ले सकते हो तो वेल एंड गुड, नथिंग लाइक इट। सही ऐसे बात है। भी कई सही। सारे हैं जो इसको फुल टाइम की तरह लेते हैं। चौथी बात, आपको ये समझना जरूरी है कि आप कितने सक्सेस की उम्मीद रख रहे हैं और आपके सक्सेस का मापदंड क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर सक्सेस? आई वांट टू बिकम फेमस, आई वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू गो वायरल। क्योंकि बहुत लोग इंस्टाग्राम पे हैं जो बिना वायरल गए भी ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वायरल जाके भी वो कहीं नहीं पहुंचे। सबसे हम्म। बड़ा प्रॉब्लम मैं जो इन्फ्लुएंसर्स, मदर इन्फ्लुएंसर्स में देखती हूँ, चाहे वो पेरेंटिंग की बात कर रहे हो, मेकअप की बात कर रहे हो, किसी भी चीज की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा मैं देखती हूँ कि उनमें होता है बर्नआउट। कि अच्छा, मैं ना, मेरा बेबी छोटा है, मैं 2 साल बाद ज्वाइन करूंगी अपनी जॉब, लेकिन तब तक मैं इन्फ्लुएंसिंग का काम करती हूँ, पैसे आते रहेंगे। तो ऐसे ना बहुत लोग हैं। हम्म। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप 1-2 साल करोगे, फिर आप बर्नआउट करोगे, फिर आप छोड़ के चले जाओगे, तो आपका सेट की हुई चीज जो आप जितनी मेहनत किए वो सब वेस्ट हो जाएगी। सब वेस्ट हो जाएगी, राइट। तो आप कंटेंट बनाइए, लेकिन अपनी खुशी के लिए बनाइए। कि हाँ, जैसे हम अपना कंटेंट फेसबुक पे डालते थे, जरूरी नहीं है कि हम्म। आपने कंटेंट डालना शुरू किया तो आप इन्फ्लुएंसर बन गए। सही बात है, सही कह रहे हैं। अगर हर मैंने भी कुछ अगर हर योगा कोई, के मैंने भी कुछ योगा के वीडियो शूट किए, एंड जस्ट इस थॉट के साथ किए कि मेरा ये नहीं था कि मुझे व्यूअर मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे वर्क की एक रिक्वायरमेंट थी। आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद कैमराज एंड ऑल, बट एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे मेरे टीम ने कहा कि मैम आप कीजिए तो शायद इट वुड बी अच्छा रहेगा कि एज ए फाउंडर आप कर रहे हैं। तो मैंने उसको, उस पैशन को लेके किया। एंड अगर आज मुझे कोई बोले कि तुम रील बना दो एक योगा की, मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एज ए क्रिएटर मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट आई हैव अ इंटरेस्ट कि ये फॉर माय ऑडियंस, इफ दे लाइक इट दैट्स फाइन। हर किसी के लिए इन्फ्लुएंसिंग या इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, एंड इट इज ओके टू नॉट एंजॉय। हाँ। My husband राइट। is happy to be a part of my videos because I bring the idea, I shoot, I direct, I edit, I post, I take care of the engagement. अगर हम्म। उनको बोल दिया जाए ना कि आप अपने प्रोफाइल पे करो, उनका प्रोफाइल 3 साल से डेड पड़ा है, तो 3 साल से उन्होंने कुछ नहीं हाँ। डाला है, क्योंकि उनसे राइट। नहीं होगा। ही इज नॉट हाँ। इन्फ्लुएंसर मटेरियल, बट ही लाइक्स टू पार्टिसिपेट विथ मी, सो ही इज देयर। तो वो मेरी भी हेल्प हो करेक्ट। जाती है और उनको भी मजा आता है, लेकिन इन्फ्लुएंसिंग पर से उनके लिए नहीं है। उन्होंने राइट। कोशिश करी बीच में कि हम कुछ लिखें पेरेंटिंग के बारे में, लेकिन हाउ ही थिंक्स एज अ पेरेंट डज नॉट क्लियरली कम आउट इन हिज पोस्ट। सो हम्म। दैट इज देयर। सो you need to have a flair for writing, you need to have a flair for uh, uh, being in front of the camera, you need to have presentable even on your worst days. अब ये क्लाइंट अगर किसी दिन आपसे, जैसे इस समय आपने मुझसे कहा कि हम लाइव पे जाते हैं, अब मेरे घर एसी वाला आ गया, अब मैं उसको भी भेज नहीं सकती, मेरे घर में मेरी हेल्पर भी काम कर रही, मैं उसको भी भेज नहीं सकती, और मुझे यहाँ पे ये अटेंड करना भी है, और मैं अपने राइट। क्लाइंट को भी मना नहीं कर सकती। तो ये मेरा मुश्किल दिन है। क्या मैं उस दिन प्रेजेंट हो सकती हूँ? क्या मैं उस दिन पॉजिटिविटी और बिना स्ट्रेस के अच्छी दिख सकती हूँ और अपने आप को उस जूम कॉल में अवेलेबल कर सकती हूँ? हाँ या ना? राइट। क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या मेरे वर्स्ट डे पे मैं इन्फ्लुएंसिंग का काम कर सकती हूँ? अगर आपके अंदर सही से बात हाँ है, आता वो है एक तो फिर चैलेंज तो है। आप सही जगह हो। सही बात और है, अगर फिर वो आपके एक मन से चैलेंज है आता है कि बहुत नहीं, मैं बड़ा। उस दिन नहीं कर सकती, मैं खाली रोजी डेज पे हाँ। कर सकती हूँ, तो आप खुद ही देख सही लो हमारी बात है। जिंदगी में रोजी डेज कितने होते हैं। राइट, राइट, राइट। नहीं, डेफिनेटली दैट्स मेक लॉट ऑफ You have to सेंस टू maintain मी। your consistency. You have to maintain your persona. There is a persona that you manage online. आपकी एक पर्सनैलिटी उभर के आती है। कोई भी 24 घंटा हाँ। एक पर्सनैलिटी नहीं होती है। अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा, आपको लगा कि अच्छा बहुत ही जॉली बबली पर्सन है, हमेशा लाइट हार्टेड रहती राइट। है, तो वह पर्सोना मैंने मेंटेन किया है ऑनलाइन। ऐसा नहीं कि मुझे कभी सही गुस्सा बात ही है। नहीं आता, या मैं कभी चिढ़ती नहीं, या मैं कभी बीमार नहीं पड़ती, बट देर इज अ सर्टेन पर्सोना एंड यू हाँ। हैव टू मेंटेन इट। यू हैव टू टॉक अबाउट इट विथ हाँ। ऑथेंटिसिटी। अब मैं राइट। एक
कितना भी चाहूं मैं अपने लिए तैयार हो सकती हूँ, लेकिन मैं ब्यूटी वीडियोस इतने अच्छे से नहीं बना पाती, मुझे उतना अंदर से फीलिंग नहीं आती। तो जरूरी नहीं है कि मैं वो ब्यूटी वीडियोस बनाऊं, मैं बस अच्छी दिखकर अपने वीडियोस में प्रेजेंट हो जाऊं, वो भी एक एस्पेक्ट है। सो यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ ऑल्सो। You must know what you can do, करेक्ट, what you cannot do, what my limitations are, कैन डू, and then post accordingly. So influencing is राइट। not just standing somewhere and clicking pictures. Everybody takes them very lightly. कि अच्छा ये तो पागलपन है, जा देखो वहां फोटो खींचने चालू हो जाते हैं। नहीं, कुछ लोग आपकी शुरू भी फैमिली को करते भी हैं और वो फिर सपोर्ट एंड हो देना होता जाते है। जब हैं हम जब मिल जाते हैं, शुरू। राइट। हाँ, there's a major burnout in the, especially in the mom area, there is major burnout. आप यकीन नहीं करोगे, हमने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, हम लोग कम से कम 40-45 ब्लॉगर्स का एक ग्रुप था। आज उनमें से सिर्फ 2 लोग एक्टिव हैं, मैं और एक और हैं। बाकी सब, किसी ने जॉब पकड़ ली, किसी ने इन्फ्लुएंसिंग छोड़ दी, किसी को मजा नहीं आया, किसी ने कुछ किया, किसी के दूसरे बच्चे हो गए, सबका बर्नआउट हो गया। तो आपको ये सोच के चलना है कि मैं ये कंटिन्यू करूंगी कि मैं बस टाइम पास के लिए कर रही हूँ, क्या मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ, या मैं बस कंटेंट अपना शेयर करना चाहती हूँ कि लोग देखें। वो भी किया सही जा बात। सकता है, उसमें पाप नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं भाई मैंने 2 रील डाल दी, अब मेरे पास हजारों के पार्सल आने चाहिए, अब चालू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, सही बात। इंस्टाग्राम दुकान नहीं है। इंस्टाग्राम में व्यूअर्स और पोस्ट करने वाले दोनों की जरूरत है। तो आप किस तरफ होना चाहते हैं? राइट, 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 आपको राइट, राइट। इन्फ्लुएंसिंग को एक जॉब की तरह लेना ही होगा, आपके फैमिली को उस प्रोफेशन को सपोर्ट करना होगा। अब हम जैसे ट्रिप पे जाते हैं मान लीजिए, या हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो सबको पता है अब मेरे घर में कि पहले फोटो खींचेगी, उसके बाद में वाला मुंह में जाएगा, कितनी भी भूख लगी हो। मैंने इट इज अ हैबिट नाउ, एवरीबॉडी नोस एंड दे अंडरस्टैंड। इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग एंड शाउटिंग एंड ruining their mood and my mood, they know that if we are there for a restaurant shoot, they will have to wait, I will have to take pictures. जब तक मेरा मन करे मैं तब तक उसका सेटिस्फैक्टरी शॉट नहीं आ जाता, तब तक वो पिक्चर्स लेती रहूंगी, वीडियो लूंगी, सब लूंगी, उसके बाद वो खा सकते हैं। और मेरी फैमिली तब तक वेट करती है। नहीं, ये आपने जैसे बहुत हम बाहर इम्पोर्टेंट। जाते हैं कहीं घूमने, हाँ राइट, जैसे हम आपने बाहर बहुत जाते हैं, इम्पोर्टेंट बोला। तो मैं जैसे अगर हम किसी ट्रिप पे गए, मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं वीडियोस और फोटोज निकाल रही होंगी, क्योंकि मुझे वो आगे शेयर करना है। वो बच्चों का ध्यान लगातार देते रहते हैं, मैं दोनों करती सही हूँ, है। लेकिन 90% बच्चों को देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। जब मुझे लगता है कि अच्छा यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, यहाँ पे हम दोनों को होना चाहिए, वहां मैं कंटेंट को साइड रखती हूँ। लेकिन अगर मैं वहां गई हूँ, तो वहां का पूरा कंटेंट शूट किया हुआ होना चाहिए मेरे पास। एक एक मोमेंट ना हो, लेकिन सही एटलीस्ट बात है। 50-60% मोमेंट्स हो कि मैं बता सकूं। क्योंकि मैंने एक बहुत अननोन, बहुत बड़े ग्रुप ऑफ ऑडियंस को अपनी लाइफ में इनवाइट किया कि देखो मेरी जिंदगी ऐसी चल रही है। उसके बाद मैं उनको नहीं कह सकती सुनो ऐसा है ना, मैं बिजी हूँ, अब तुम चले जाओ। वो नहीं हो सकता। वो आपकी सही जिंदगी है। में है, अब आपको पसंद है या अब आपको पसंद नहीं है। अगर आपको सक्सीड करना है, तो आपको उस ऑडियंस को हमेशा ही अपने साथ, अपने मतलब अपने साथ हर जगह लेकर जाना पड़ेगा। और वो आपकी फैमिली का सपोर्ट होना, वो फैमिली को समझना कि ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है, ये मजाक नहीं है, वो देखना पड़ेगा। राइट, राइट, राइट। नहीं, एब्सोल्युटली राइट। एंड आई एम सो हैप्पी, प्रिशा, टू कनेक्ट विद यू, बिकॉज आई फाउंड कि जैसे हमारी टैगलाइन थी व्हेन वी थॉट अबाउट दिस पॉडकास्ट, वी थॉट इन्फ्लुएंसर्स, एंड वी थॉट कि हाउ दैट बिकम्स फॉर देयर पैशन टू प्रोफेशन। बट मेरे को आपको अंदर प्रोफेशन भी दिखा एंड पैशन उससे ज्यादा दिखा, यू नो। एंड विथ योर बिजी लाइफ एंड ऑल, आपको पता है कि आपको क्या करना है। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अस एज अ बीइंग अ वुमन। तो वो बहुत है। एंड आई थिंक अब हम लोग एंड कर सकते हैं अपने सेशन का। एंड अगर आपका कोई और एडवाइस हो फॉर वुमेन और समथिंग, दैट डेफिनेटली कैन। Yes, I do have two advices. One, individually as a woman, always fix yourself first. जब तक आपकी अपनी तबीयत या आपका अपना सिस्टम ठीक नहीं है, तब तक आप किसी और को ठीक नहीं कर सकते। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो, आप दूसरे को प्यार नहीं दे सकते। तो हमेशा सबसे पहले अपने आप को ठीक करने के बारे में सोचिए, अपने आप को फिक्स करने के बारे में सोचिए। सेकंड, एज एन इन्फ्लुएंसर, डोंट गेट इनटू इट इफ यू आर नॉट सीरियस। हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान कि हाँ मैं 5-7 साल तक ये करना चाहती हूँ, मेरे पास वक्त बिल्कुल है। सही है।
मेरे बिल्कुल बच्चे सही इतने है। बड़े हो गए हैं कि मैं अब इस पर एज अ करियर फोकस कर सकती हूँ। ये घर बैठे टाइम पास का जॉब नहीं है। अगर आपको सच में इसमें ग्रो करना है तो आपको सच में इसमें टाइम, मनी, दिमाग, एनर्जी सब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोनों एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कि ये दोनों चीजें जो आपने बोली वो बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, कि आप इसको एज हम्म। ए सीरियसली ले, ना कि ये कि बस आज किया और कल छोड़ दिया। अगर सीरियस है तो आप करेंगे ही ऑफ कोर्स, बट स्टिल। इन्फ्लुएंसर जर्नी को आप सीरियसली लें। अगर आप हाँ, शौकिया पोस्ट करना चाहते हैं तो आपने एक पोस्ट आज किया, एक पोस्ट 3 दिन बाद किया, दूसरा पोस्ट, तीसरा पोस्ट जो है वो छह सही महीने बात है। बाद किया, वो चलता है। लेकिन वो अगर आप चलता है। जेन्युइनली आपको लगता है कि आप इसको एज अ करियर लेना चाहते हैं, सिर्फ शौकिया नहीं बनाना चाहते हैं, करियर की तरह लेना चाहते हैं, तो आपको फिर उस हिसाब की उसमें मेहनत डालनी पड़ेगी। बैठे बैठे तो किसी को कुछ नहीं मिलता। नहीं नहीं, डेफिनेटली आज हम जॉब भी करते हैं, उसमें भी हमको 8 9 आवर्स देने पड़ते हैं मिनिमम। और अरे उसके आप बगैर तो पेरेंटिंग जॉब भी में करते हो, उसमें भी आपको चौतरफ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सही पेरेंटिंग का बात है। कुछ। कोई भी तो चीज मतलब बिना मेहनत जिसको के हम, तो नहीं हो सकती। हाँ, तो राइट अपना पैशन राइट पहचानिए, उसके पीछे जाइए, लेकिन राइट पक्के होके जाइए, पक्का निश्चय करके जाइए कि नहीं ये तो करना है। राइट राइट राइट। आई थिंक थैंक यू प्रिशा जी फॉर टुडेज टाइम आपने हमें दिया। एंड आप, अगर आपको आपकी ऑडियंस जो है, अगर इफ दे वांट टू अवेल दी एनी सेशन ऑफ आर्स, अगर सर्विसेज लेनी है तो हम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन उनको कुछ टू सी कि वो योगा के लिए बने हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को योगा से कनेक्शन आता है, कई को डिफरेंट चीजों से। सो उसके लिए एक हम्म। एक्सपीरियंस देना जरूरी होता है, एंड स्पेशली ऑनलाइन, बिकॉज यू नो कि कोरोना से पहले कोई ऑनलाइन सोचता भी नहीं था कि योगा कैन बी पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उसका एक एक्सपीरियंस देना लोगों की, यस यू कैन डू इट, एटलीस्ट यू कैन एबल, आप अपना basic fitness level, so definitely you can achieve by through this. राइट। So thank you so much. Thank you so much for your time, and सेम हियर। connect you थैंक यू सो again. मच फॉर हैविंग मी। आई होप दिस पॉडकास्ट टर्न्स आउट ग्रेट। डू शेयर द फाइनल लिंक विथ मी। आई वुड लव टू see how it Yes, went. yes.